certain posters and slogans were shortlisted and then screened, and then they were judged based on it. I'll start announcing the names of the winners, beginning with the poster category first for class 6 to 10th. The first prize in poster making category goes to Nitish Agrawal, class 9th, Vishwa Bharati Public School, Noida. The second prize goes to Anish Gupta, class 6A, Goodley Public School, Shalimar Bagh, New Delhi. Third prize under the first poster making category goes to Soumya Agrawal, class 8th, Delhi Public School, Noida. Three consolation prizes are also being awarded under all the categories. The first consolation prize in the poster making goes to Bhavya Chauhan, class 9th B, Brian International School, Mayur Vihar. Aishwarya Aradhna, class 7th, Brightland School, Dehradun. Miss Amogha GS, Amity International School, Gazipur. The second category under the poster making competition was for class 11th and 12th. The first prize in this category goes to Deshatra Podar, class 11th A, Brian International School, Mayur Vihar. The second prize goes to Shriyanka Das, class 11th, DAV Public School, Cuttack, Odisha. Third prize is Paras Dalal, class 11th, Manav Rachna International School, Gurgaon.
consolation prizes under this category goes to Jayashri Sahu, Kendriya Vidyalaya, Odisha. The slogan writing competition was either in the Hindi or English category, and for the under the first category for class 6 to 10, the first prize goes to Purvi Ghai, class 9th, GVN School, Faridabad. And the slogan was Disaster Management Today, Alive Tomorrow, Save our Mother Earth from being destroyed by disasters. Class 11B, Evergreen Public School. The slogan was, Disaster management starts with a D but begins with you. Class 10, DAV Public School, Pritampura. The slogan was, प्राकृतिक आपदा बिन कहे आती है, ध्वस्त सब कर जाती है. Under the consolation category, Marvi Beloria, class 7, Springdale's English School. And the slogan was, don't be scared, be always prepared. Preeti Yadav, class 7th, Lady Florence Convent School, Gurgaon. आपदाओं से खुद को बचाएं, विद्यालय में सुरक्षा के नियम अपनाएं. Vishnu Priya, class 10th, Nalanda, Bihar. And her slogan was, जन जागरूकता अभियान करेंगे, आपदा से बचाव करेंगे. Under the prize goes to Tanya Luthra, class 12th, Rohini. The second prize goes to Arpit Gupta, class 11th. And the slogan was, do your work with pride, but safety in stride. The third prize goes to Rabika Nasir, class 12th, Rohini. And the slogan was, school is it. And his slogan was, open the door to safety, for which awareness is the key. Ankit Gupta, class 11th, slogan was, safety does not come instantly unless implemented constantly. Pallavi Ratra, class 11th, Amity International School. We would also like to take this opportunity to acknowledge ASN School from Mayur Vihar, who had put up such a commendable skit.
Now we would also like to acknowledge all the children who had put up such a nice kit for all of us and who are all Adhish Garg, class 10th. Amrita Anil. Anusha Gopidas. Tanya Sood. Nipunika Srivastava. Shivam Agrawal. Naman Jain. Anuj Bansal. Ayushi Rana. And Pratibha. We also take this opportunity to acknowledge the support extended by Save the Children, who had coordinated the visit of children from Uttarakhand. We would like to acknowledge the four Gaurav Nautiyar and Aarti Thapliyal. Thank you. Dr. Anand Sarup Arya, a pioneer in the field of earthquake, is recognized for his work not only in India but globally. I would request him to share his thoughts with us. श्री सत्येंद्र और उपस्थित बहनों और भाइयों, आजकल बहनों भाइयों कहने का रिवाज चल रहा है, चूँकि नेताओं का जमाना है। तो मैं तो ये सब देखने आया था, अटेंड करने, और मुझको ऊपर बिठा दिया गया। बोलने के लिए भी आदेश हुआ तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं जीवन भर एक टीचर रहा हूँ। उनकी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद वहीं पर मैं टीचिंग करता रहा। तो टीचर के साथ में मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ
उसके बाद में अर्थक्वेक इंजीनियर बना। तो मेरा पहला जो प्यार है वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से है। अर्थक्वेक सेफ्टी किस प्रकार से हो और स्कूलों की अर्थक्वेक सेफ्टी मेरा एक प्रिय विषय रहा है। इसके ऊपर जो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चला है उसमें हमने पूरा योगदान देने का प्रयत्न किया है और कोशिश ये की है कि जो हमारे भूकंप से प्रभावित स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उन सब के अंदर जो नए विद्यालय बने वो भूकंप से सुरक्षित बने और ये तकनीक उसमें सब में डाली जा रही है, ये मैं आपको सूचित करना चाहूँगा। दूसरा, मेरा प्यार स्कूलों से है। तो जब मैं रिटायर हुआ तो समाज को अपनी ओर से कुछ वापस करने के लिए, जिस समाज ने हमको इतना दिया पूरे जीवन में, तो मैंने एक स्कूल की स्थापना रुड़की में की थी, क्योंकि रुड़की में पढ़ा था मैं। वो अब प्राइमरी कक्षा से लेकर के 10+2 तक है। उसमें इस समय लगभग 3200 बच्चे हैं। स्कूल बहुत बढ़ गया है, मेरी जो प्लानिंग था उससे बहुत अधिक। उसकी नई बिल्डिंग बनी तो हमने उसको पूरे तरीके से भूकंप अवरोधी बनाया, क्योंकि रुड़की भी जोन 4 में आता है। तो मेरा जो प्रयत्न है इस समय वो ये है कि भारतवर्ष के जितने भी नए स्कूल बने वो सब भूकंप से और अतिवृष्टि से और साइक्लोन से, तीनों से उनका बचाव हो सके, उसके लिए हम डिज़ाइन अपने बना रहे हैं। एनडीएमए के भट्टाचार्य जी हमको कई बार बुलाते हैं एनडीएमए में अपना कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए। तो आज उन्होंने मुझको नीचे से ऊपर बुला के बिठा दिया। अब जहाँ तक मेरा अपना विचार है वो ये है कि जितने भी स्कूल पुराने हों उनको रेट्रोफिटिंग किया जाए। रेट्रोफिटिंग के लिए हमने गाइडलाइन बना के दिया है। बिहार में आजकल हम सर्विस दे रहे हैं महीने में एक बार। वहाँ पर सारे स्कूलों की रेट्रोफिटिंग कराने का हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसको मुख्यमंत्री ने मान लिया कि सब विद्यालय और सब हॉस्पिटल उनको देख करके उनको मजबूतीकरण कर दिया जाए कि वो आने वाले किसी भी बड़े भूकंप में उनमें हानि ना हो, ना बच्चों को कोई हानि हो, ना वहाँ पर जो मरीज लोग हैं या डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको कोई हानि हो। ये बहुत बड़ा काम है। और NIDM के लिए भी हमने एक गाइडलाइन बना के इनको दिया पूरे 60 कंट्रीज के लिए कि भवनों को देख करके हम कैसे बता सकें कि इसमें भूकंप अवरोधता है या नहीं है। नहीं है तो उसको अवरोधी बनाया जाए। तो मैं एक इंजीनियर हूँ तो प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, थियोरेटिकल कम। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने गाइडलाइन बने वो प्रयोग में ला करके एक्चुअली प्रैक्टिकल में उनको देखा जाए, दिखलाया जाए। हम जो भुज का जो भूकंप हुआ था 2001 में, उसके पश्चात जितने वहाँ पर भवन निर्माण हुए हैं लगभग 2 लाख, सब भूकंप में या हॉस्पिटल हैं या विद्यालय हैं जिनका रेट्रोफिटिंग करा दिया गया है। तो इसी प्रैक्टिस को मैं लेते हुए अब मुझको रिटायर हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके रुड़की विश्वविद्यालय से, और अभी तक मेरा जो योगदान है वो तमाम थ्योरीज को प्रैक्टिकल रूप देने की तरफ लगा हुआ है।
तो मेरा अनुरोध NIDM से भी होगा कि वो कुछ न कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी लेकर के चलें, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, जिसमें कि मुझे पता नहीं कितने स्कूलों की हानि हुई है। मैं चाहूँगा कि वहाँ के सब स्कूल जब दोबारा बने तो पूरी तरह सुरक्षित बने, और उसके लिए जो हमारा स्कूल रुड़की में है, जिसमें मैंने अपना काफ़ी धन भी लगाया हुआ है, वो स्कूल अपनी तरफ से किसी एक स्कूल को अपना, जिसको पालक कहते हैं, पालक भी लेने के लिए तैयार होगा कि उसको पूरी प्रकार की सहायता दी जाए। इसका मैं आपके सामने अनाउंस करती हूँ। धन्यवाद। Shri B. Bhattacharya ji has spent his entire professional career in Department of Atomic Energy, Government of India, during which he has distinguished himself equally in both research and development work, as well as execution of projects. Under his guidance, some of the highly complex and multidisciplinary technologies, all from grassroots levels, requiring the best of all branches of engineering sciences, have been implemented, placing India in the forefront of nuclear science and technology in the world. In recognition of his outstanding contribution in the field of nuclear science and technology, the President of India has confirmed him with the award Padma Shri in year 2001. Since August 2006, Shri Bhattacharya ji has been member of National Disaster Management Authority. Now I request Shri B. Bhattacharya ji, Honorable Member, NDMA, to bless the gathering with his advice and direction on disaster management. Mr. Satyendra, Dr. Ghosh, what happened to former DG? He is there, NDRF. Ladies and gentlemen, welcome to each one of you to this important event that has been organized by NIDM. And you got a very special welcome to the future ambassadors of the country, that is the children of this, our children of the nation. Now I say something keeping only the children in mind. Idea is that, as it has been already spelled out by other speakers, our future lies on how do you groom these children, how they are enabled to do much better. They are doing much better than us at a compared level. How they are capable of getting motivated to serve the nation, not interested only to make their own or their family business or wealth, but do something for the nation, as Professor Arya has spelled out and he has done in his career. This sentence I am saying because I always get inspired from such words and his association with us. Now before we proceed further, India, as we know, are prone to both man-made and natural disasters. This much children you know that. Accidents in roads, mining industry, chemical plants, oil tanker, fire in the kitchen or something, in the schools. They're all man-made. Similar the natural ones, you know, whatever has happened in Uttarakhand, like flood, cyclone, earthquake, and tsunami, and that type of thing. Now, whatever we know now, at the present level of our understanding, we can confidently say that these man-made ones can be prevented. उसको बंद कर सकते हैं हम लोग, provided we mobilize enough resources and enough science to understand and technology to implement that understanding. If you give this, then this can be prevented. And it has been demonstrated quite a few places in the world, no man-made disasters. But even then,
man-made ones are also made by man only, no? Chemical plant ho, Bunsen gas cylinder ho, kuch bhi ho. So somewhere some mistake will be there as you make. These mistakes are not left intentionally, but you don't know. So that means your understanding of science and technology has not grown to that level to find out if इसमें fault hai. So it passes. And it creates problem after 2 years, 3 years, 4 years, depending on what quality, and that's why we pay more and buy better quality product. Idea is that only, nothing else. But when you come to natural ones, whatever you know now, it cannot be prevented. Then what it can be done, as has been told, that the impact of such natural events can be minimized, and we use the term mitigated. Now what does it mean? I have no resources enough to stop all man-made ones, even though they are preventable. And I have no capacity of science and technology, even if you give me the entire nation's GDP, I cannot prevent this natural hazard. Then what do? Everybody has to live everywhere in the world, not only in India, with some risk in the society. Nobody can say, हमको absolutely safe place में लेके चलो, हमको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा. I will explain how later on. So then, question is why you are spending all our efforts, and finally why you are calling this particular children community, we call them the students who were there, either some of them are students or did not be students also. So what can be done is that you do something where the level of the risk is minimum. That means, okay, अगर earthquake, राजा आर्य साहब बोला था, इतना भूकंप होगा तो strong होगा तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए. That doesn't mean that कभी भी नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो कुछ ना कुछ होगा. आपका पल्स नहीं होगा तो आसपास कुछ हो गया, आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, no food, no nothing, से कुछ ना कुछ तो होगा. But then this acceptable risk has to be minimized, and that is our job. Everybody, right from president onwards up to that youngest fellow who is sitting in front of me. सबका काम है इसमें. Something has to be done to lower this acceptable risk. कैसे improve करेंगे society में risk कमती करो, and that is what is called disaster का जो risk का उसको reduction करो. And that is why I must compliment now NIDM, including our organization also, that we are, let us say, celebrating at the right time in the light of what has happened in Uttarakhand, the Disaster Risk Reduction Day, which is observed at United Nations also. Now, what do I do this reduction? इसका मतलब क्या है? Now, that means whatever you do now, उसमें make sure उसमें risk है क्या कुछ? Disaster, any risk in terms of some emergency will arise, some disaster will arise. है तो whatever you are doing, either in development effort, road बनाने का, building बनाने का है, dam बनाने का है, shelter बनाने का है, make sure that it has been made. All disaster related issues are addressed. वो component of अलग address करो. That means we call it mainstream those reduction programs in this. That road must not fail, it should not get submerged. You cannot say, supposing it happens, which has never happened, as it has happened in the cloudburst in Uttarakhand, something else, but it should not, the impact will be minimized. So that is the job of this. So you mainstream this. Second, which is most important, and that is where the children are more important in that, is that if I have said that man-made ones are preventable, but hoga, nobody can give a guarantee that there will not be any accident. And natural ones, I said, it cannot be prevented, it will happen every year. So now then what do? You prepare yourself, and that is all the lectures which were there, that prepare
ourselves to face this. But because I have already addressed the issue of mitigation, जैसा रोड बनेंगे नहीं तो होना चाहिए, बैंक रिवर का फेलियर नहीं होना चाहिए, फ्लड आ जाएगा तो when I release it should not get flooded, make something to divert the excess water somewhere else. फिर earthquake होगा तो make it resistance to earthquake resistance, maximum expected motion जो होगा, और ये सबको मालूम है, उनसे हम थोड़ा सीख लिया है, उससे नहीं गिरना चाहिए, गिरेगा तो थोड़ा क्रैक होगा, पूरा नहीं डूबना चाहिए. I don't want to get killed, my family members should not get killed. ऐसा करेगा तो impact अगर minimum होगा, then only I can survive. Otherwise, every time you prepare, whatever you have learned in the school, that doesn't mean every time होगा तो same problem होगा. And you undergo these drills, you should ask yourself, हर एक साल में होगा तो क्यों ऐसा होता है? Next time में होगा तो इसका इफेक्ट कमती होना चाहिए. तो उसीलिए ये मिटिगेशन प्रोग्राम हम एड्रेस कर लिया. उसमें एक उत्तराखंड इशू आई वांट टू एड्रेस. उसका फर्स्ट कंपोनेंट है, आप सब बना लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, पॉसिबल होगा तो इसको अर्ली वार्निंग दे सकते हैं क्या हमको कि ये होने वाला है. wherever possible you give early warning so that उस टाइम में हमारा प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, डूब गया तो ठीक है, लेकिन आई विल सेव माई लाइफ एटलीस्ट. सो अर्ली वार्निंग का सिस्टम जो है, इट इज एटलीस्ट ओनली टू सेव द लाइफ ऑफ ऑल द कम्युनिटी एंड दे कैन गो टू द सेफ प्लेस एंड द सेफ प्लेसेस, द शेल्टर्स एंड ऑल आर टू बी मेड. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. वार्निंग के लिए हम लोग IMD को बता दिया था, अभी हल में they are going to implement that why we couldn't give the early warning that ये होने वाला है उत्तराखंड. So they are working on that so that you stop this traffic from Haridwar. भाई अभी से बंद है, नहीं जा सकते.